हेलो एवरीवन वेलकम टू आरएस एडु कॉर्नर। तो आज वीडियो रे आमे डिस्कस करबा अबाउट द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स जोटा कि आमर वेस्टेड सिलेबस अनुसार बटनी रो गोटे चैप्टर रही एंड 4 मार्क्स रो एथुरु क्वेश्चन भी आपण पाइबे एंड क्वेश्चन गुडा केवल जे वेस्टेड स्टूडेंट को पाई हेल्पफुल रहइबो सेटा नुहे पीजी स्टूडेंट को पाई भी हेल्पफुल रहिबो जो माने कॉमन एंट्रेंस पीजी रे दवा पाई जाउछन्ती बटनी रे सेमानन पाई भी हेल्पफुल रहिबो एंड सिटी बीएड एंट्रेंस जो माने दबाउ जाउछन्ती सेमानन पाई भी एसेंशियल रहिबो एंड जो माने प्लस 2 साइंस कंटिन्यू करूछन्ती आल्सो फॉर देम इट विल हेल्पफुल। तो समस्तन पाई एटा हेल्पफुल रहिबो। तो किछि क्वेश्चन हमें डिस्कशन करिबा। So let's discuss about the first question of today's session. So first question is during budding in yeast which process occurs, and options are cytokinesis is unequal, identity of parent is lost, and clones are produced. So here you can see here is the budding of yeast। तो पिक्चर टा मु जहाँ ड्रॉ करिछि एटी देखि परथिबे एटा फॉर्मिंग द बॉड हमर ईस्ट रे एटा टोटल टा होछि ईस्ट सेल। तो ईस्ट रे जो हमर बॉड टा फॉर्मेशन हेछि दैट इज ड्यू टू साइटोकाइनेसिस। तो ईस्ट रे हमर जो बॉडिंग टा हला दैट इज ड्यू टू अनइक्वल डिवीजन ऑफ cytoplasm. So here right option is cytokinesis is unequal. Okay, cytokinesis means division of cytoplasm. Then next question, most common asexual structure produced in algae is option गुड़ा मु कहूनी that is multicellular. Then next question, in which of the following plants root bud is involved in vegetative propagation? तो vegetative propagation जो हुए हमारा एठी जो list of the plants देजी sugar cane, banana, ginger and dahlia। तो vegetative propagation जो हुए हमार सेथरे root bud टा कोथरे involve हुए। Here you can see the structure of root buds. Here are the root buds of dahlia plant। तो डालिया आपण माने समस्त देखि चंती जोडा हमर शीत दिने फुटे फ्लावर्स बड़ बड़ फ्लावर। तो एटा होची हमर डालिया रा रूट्स गोडा। तो डालिया रा रूट्स सब एई भलिया देखिया पाए। ओके, तो रूट बड सब तार इन्वॉल्व हुए कोथरे हमर वेजिटेटिव प्रोपागेशन ने एई थ्रू ही नुवा प्लांट तार बाहरे। क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, for commercial propagation of banana and ginger which of the following part are utilized respectively? Okay, so हमारा commercial propagation पाई banana आउ ginger रा। okay, तो banana आउ ginger रा हमारा propagation पाई को part टा यूज करा जाए। तो हमें समस्त जानी छे से rhizome of ginger is used for propagation and for banana suckers are used. So the right option is option number 4, that is sucker and rhizome. Then next question, offsprings produced through which of the following processes or structures represents clone? Okay, so here are the options through which offsprings are produced, but we have to find out through which process the clones are produced. That means हमारा gametic fusion ने भी new offspring produce हुए and syngamy रे भी new offspring produced हुए, then vegetative propagation रे भी new offspring produce हुए। okay, तो से question को होजी कि structure represents clone। okay, just try to understand the question that offspring amara produced होची and that offspring represents the clone, means जहाँ हमारा parents थिबे पूरा तांको बड़ी देखा जाउतिबो। so that is the vegetative propagation। okay,
तो गैमेटिक फ्यूजन परे हमर कोन होची ना बोथ इन गैमेटिक फ्यूजन एंड सिनगैमी रे हमर जाइगोट जो प्रोड्यूस्ड होउचंती से माने क्लोन नुहंती बट इन केस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग द ऑफस्प्रिंग्स आर क्लोन ऑफ देयर पेरेंट्स क्लियर then asexual reproduction is common in single cell organisms having simple organization then aquatic plants so asexual reproduction is common in aquatic plants okay mostly amaro aquatic plant ba water plants जो माने रहिले सेथिरे ही asexual reproduction बेसी देखा जाए clear then fleshy birds in aquatic plants are known as turians okay तो turians हमर केमिति हेता है गच्छ एमति सब थिबो जो गुडा aquatic plant रहिला ए बेले हमर सब fleshy bulb थिबो एमति सॉफ्ट bulb थिबो fleshy bulb सब थिबो those are known as turians and offset तो जानि चंती bulbil भी जानि चंती rhizome जानि चंती offset आउट के मन पके दोची offset हमर जोडा तो एगुड़ा हमरो जो पिस्टिया प्लांट रहिला दळ जोटा हम कहूचे पिस्टिया दळ रहिला पिस्टिया प्लांट रे these are the offsets okay this person is called offset एटा एटा मन रखतेबे offset टा कोन बोले bulbils जानि चंती and rhizome भी जानि चंती okay then in cutting method auxin hormone is used to develop shoots initiate leaves and initiate roots okay so as we know that auxins influence the elongation of stems and leaves and also it helps in ripening of fruits and growth of the thickness of trees but it stimulates the formation of new root tips in stem cuttings okay so here the right option is initiate roots okay तो हमें जतले गछटा को काटी दबा सपोज आमे स्टेम को काटिले एंड काटिकरी ताको आमे पानी भीतर रखिले तो ए जगह रो जो रूट्स गुडा बाहर दैट इज तो एट कटिंग रो हमर जोटा रूट्स बाहरला तो ऑक्सिन हार्मोन टा हेल्प करे हमको ए न्यू रूट फॉर्मेशन ले ओके सो राइट ऑप्शन इज इनिशिएट रूट्स then in which of the following plant grafting is not possible that is maize plant रे हमर grafting हे परबो नाही the next question select a plant which flowers only once in its lifetime generally after 50 to 100 years and produce large number of fruits and die so that is bamboo बाम्बो प्लांट रे हमर कोन हुए तर टोटल लाइफ रे होल लाइफ रे वंस ही फ्लावर आसे आ से फ्लावर्स रा 50 टू 100 इयर्स परे ही आसे एंड गोटे टाइम से थरे फ्लावर्स आसीबो तापर बहुत सारा फ्रूट्स आसीबो तापर गछटा मरि जिवो क्लियर द नेक्स्ट क्वेश्चन ग्राफ्टिंग मेथड कैन बी यूज्ड इन ऑल ट्रैकियोफाइट्स ओनली इन जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स in cambium containing eustelic plants only in atactostelic plants okay so as we know that grafting is the placing of a portion of one plant on stem or root or branch of another plant in a such a way that the union will be formed and the partners will continue to grow okay तो grafting हमें एटे जानले कि गोटे थिबो हमरो स्टॉक थिबो गोटे प्रकार रो प्लांट थिबो एठी जोटा को हमें कहूचे स्टॉक ओके एंड आउडे नुआ प्लांट रो गोटे पोर्शन हमें आनिबा दैट इज कॉल्ड एज सीओन दिस इज सीओन सॉरी SCION ओके सो दिस इज स्टॉक जो थरे हमें जॉइंट करबा और जोटा को आनी के जॉइन करबा दैट इज सीओन ओके तो एटा हमर सीओन आ स्टॉक रो एटी यूनियन परे ओके एडी सीओन आउ स्टॉक रो तळे यूनियन हे जाउची सेतेबेले से माने कंटिन्यू करचंदी तांकर ग्रोथ टा आज अ न्यू वेराइटी
ओके सो दैट इज नोन एज ग्राफ्टिंग तो ग्राफ्टिंग मेथड टा हमर सबु प्लांट पई एप्लीकेबल नुहे तो क्वेश्चन टा इट होची जे ग्राफ्टिंग टा को plants रे हेई परिबो ओके सो as we know tracheophytes are the vascular plants and gymnospermic plants we know those are the naked seeded plants then in cambium containing eustelic plants okay eustelic and actinostelic are nearer actinostelic means हमर एटा मोनोकोट रे देखा जाए ओके देन eustelic फर्स्ट बुझबा हम टिके मन पकेबा स्टेलर सिस्टम टा टेरोफाइट रे हम स्टेलर सिस्टम पढितिले तो स्टेलर सिस्टम हमर कोन एटा कैम्बियम एटा रहउची तो एटा हमर जाइलम फ्लोएम रहउची एटा होची हमर कैम्बियम ओके तो एटी मझी रे हमर पीथ रहिबो ओके एठी पीथ रहउची एंड आर आउटसाइड रे ए भली सब जेतले कैम्बियम अरेंज हे कि रहउचंती दैट स्टेलर सिस्टम इज नोन एज योर eustellar system okay so plants in which this such kind of stellar system is found is called as eustellic plants तो जो प्लांट रे हमरो कैम्बियम थाए आउ eustellic plants okay in cambium containing eustellic plants only in case of those plants grafting method is possible clear तो এটা important question मन रखिबे right option is option number 3 in cambium containing eustellic plants okay then next question in cara male sex organ is called direct question this is globule then in majority of plants fertilization is the next question in majority of plants fertilization is external internal and oogamous isogamous external and oogamous so right option is in majority of plants fertilization is internal and oogamous then in diploid organisms specialized gamete mother cells produce gametes they are called ते भलसे बुझिबा क्वेश्चन टा तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रे हमर स्पेशलाइज्ड मदर सेल्स जो रहिले से माने जो गैमेट प्रोड्यूस करंती ताकि कोन को जाए मियोसाइट्स ओके then which of the following statements are correct about artificial vegetative propagation of plants we get seedless plants by this method by artificial propagation many plants can be grown from just one parent then the new plants produced by this method will be exactly like the parent plants okay so we get seedless plants by this method it's right by artificial propagation many plants can be grown from just one parent it's also right in case of artificial vegetative propagation then the new plants produced by this method will be exactly like the parent plants it's also right so the correct option is all of the above that is option number D then in which artificial propagation method stalk and scion are involved eta just upare kahitile grafting method re that is grafting then name the method of asexual reproduction in plants in which callus is produced that is micropropagation okay so as we know micropropagation is the process in which asexual reproduction occurs in a in vitro condition that means amara जो लैब सब रहिला लैब रे aseptic condition ने सेटा हमर asexual reproduction formation होबो and where callus is produced so that method is known as micropropagation then development of embryos directly from the cells of nucellus is known as polyembryony okay तो polyembryony हमर कोन को जाय साइट्रस केस ता में मन पकेबा लेंबू रे हमर जो भीतरे सब मंजी थाए एटा मोर देन one embryonic condition that is polyembryony तो हमर development of embryos directly from the cells of
nucellus is known as polyembryony. Okay. Then in which artificial propagation method stalk and scions are involved? Eta grafting also we had already discussed. So look at here, here is a very good picture. Here you can see this is the stalk and this is the scion. So when stalk and scion are grafted here, this is the grafting union, and then after those wrapped and waxed, then they will grow. Then banana plant develop from sucker. Vegetative growth of potato is by tuber. एट भी खाली मन रखिबार अछि किछ पढ़िबार नाही.